Okay, tell me something about yourself in brief. Good afternoon, sir. My name is Kaustubaras. I am from Changad of Kolhapur district from Maharashtra. I have completed my schooling from Vivek English Medium School. I have completed my diploma in mechanical engineering from MW Polytechnic. I have completed my bachelor's in mechanical engineering from Modern College of Engineering, Pune, In which year you graduate? in 2022, sir. Yeah, tell me your favorite subject, 5 favorite subjects for interview. SOM, Fluid Mechanics, Thermodynamics, Machine Design, and Heat Transfer. Machine design and heat transfer. Do you know about the NPCIL power plants in Maharashtra? Yes, I know about one plant that is located in Tarapur, sir. Okay, great. So in machine design, how you define, like, अगर आपको बेयरिंग्स यूज करना है तो टाइप ऑफ बेयरिंग्स बताइए आप. Sir, and it's based on the like spherical ball bearings, cylindrical bearings, taper cylindrical bearings, needle bearing. Yes, sir. Yes. ओके, और कोई? Tapered roller, needle bearing, spherical ball bearing. Yes, sir. जनरल बेयरिंग. What, sir? जनरल बेयरिंग. I'm not able to hear you properly. ओके, जनरल बेयरिंग आपने सुना है नाम? General bearing. या General bearing. No, sir. I haven't heard of it. नहीं सुना आपने नाम? No, sir. ओके. Sorry, sir. Journal. Yes, sir. Yes, sir. Journal bearing. Yes, sir. I heard of it. Okay, great. So what's the difference between general bearing and anti-friction bearing? Anti-friction, sir. हाँ. No, sir. I have no idea about anti-friction, sir. Journal bearing. It is like uh, it is inside the casing, like a shaft, like structure. So that is journal bearing. Okay, you don't know about the anti-friction bearing. No, sir. Sorry, sir. I am not able. Hydrodynamic lubrication सुना है? Hydrostatic and hydrodynamic conditions of lubrication. Yes, sir. Okay. So what is hydrodynamic lubrication and hydrostatic lubrication? Sir, basically hydrostatic lubrication, the lubrication or the oil film which is provided by some external source by like use of any pump or any pressure by using external pressure. In sir hydrodynamic, the pressure developed or the bare lubrication oil film which is developed, it is due to the motion of our shaft, sir. Yes, due to the motion of shaft that film is developed, sir, in hydrodynamic condition. Okay. Do you hear about the collar? Collar. Collar. Yeah, in machine design. Yes, yes, I have heard. Okay. Where is column is used? Collar. Where is collar is used? Sorry, sir. Okay. Do you know about the clutch? Yes, sir, clutches. Then why we use clutch? Sir, clutch is basically using transmission system for a smooth transfer of power to like from generating source to the wheels. Okay. Difference between the clutch and coupling. Sir, clutch we can engage or disengage as per our requirement, but coupling is a sir, fixed part, so it will power transmit the power continuously. But clutch we can control when the power is to be transmitted or to not, no, not to be transmitted, sir. Then what is brake? Brake. Yeah. Brake, sir, is a device which is used to retard the motion of like vehicles or any moving Okay. object by the generally use of friction. Okay.
The type of springs. You know Sir, the. Have you learned about the springs? no, sir. The machine design. You don't learn about the Generally, sir, there are spiral leaf springs, like leaf spring. Sorry, sir, I'm not able to recall the names. spiral Yes, a spiral spiral, springs. yes, a Okay. spiral, torsional spring, sir. Um, Okay. Where we use like spiral spring or leaf spring? कहाँ use sir, करेंगे हम leaf spring? like when the load is more, heavy loads are used at that time, sir. The leaf springs are used, and when other moderate loads or lesser loads, that time, sir, spiral springs are used. Heavy load के लिए spiral spring use नहीं कर सकते हैं. Mm. Yes, sir. We can use, but sir, comparing both, sir, leaf spring is generally used in heavy load applications. कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, sir. तो बस एक यही रीजन है लोड का. हैवी लोड होगा तो लीफ स्प्रिंग यूज करेंगे और लो लोड होगा तो स्प्रिंग मतलब स्पाइरल स्प्रिंग यूज करेंगे. No, sir. Sorry. ओके लीव इट. सो हाउ यू डिफाइन प्रेशर वेसल? Pressure vessel are basically the containers that are used to store the heavy fluids. हैवी फ्लूइड्स. Sorry, sir. Pressurized fluids. प्रेशराइज्ड फ्लूइड्स. Yes. जस्ट प्रेशराइज्ड फ्लूइड्स. Yes, sir. Generally, high pressure fluids. ओके. वैक्यूम फ्लूइड्स यूज कर सकते हैं अगर हमें एटमॉस्फेयर से नीचे रखना है किसी फ्लूइड को, तो प्रेशर वेसल यूज कर सकते हैं कि नहीं? एटमॉस्फेयर से नीचे, एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे रखने पे नो सर, यूज नहीं कर सकते. क्यों? उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो प्रेशर वेसल से यूज करेंगे सर वैक्यूम के लिए. वही तो आपने बोला हैवी प्रेशर के लिए यूज करेंगे, वी वैक्यूम के लिए भी यूज कर रहे हैं. सर वो वैक्यूम के केस में सर सिर्फ वो प्रेशर बाहर इन एक्सटर्नल प्रेशर होगा सर उसमें, उस बॉडी पर. ओके. हाउ यू डिफाइन लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड प्रेशर वेसल? Container is the like sir used to store the substance which is at atmospheric pressure, sir. ओके. We can call it container, and when the higher pressures, so we use pressure vessels. We call it. हायर प्रेशर, नॉट फॉर लोअर प्रेशर. Yes. एंड यू यूज फॉर वैक्यूम यू यूज आल्सो प्रेशर वेसल्स. You can say that only higher pressure. Sir, actually about vacuum, I have not no clear idea, sir. So, Okay. Okay. What is the like? Give me like the name of three theory of failures. sir, three like maximum normal stress theory, maximum shear stress theory, and distortion energy theory, sir. अगर कंडीशन हाइड्रोस्टैटिक है, हमें अंडर वाटर कोई कंपोनेंट डिजाइन करना है, तो कौन सी थ्योरी यूज करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सी थ्योरी बेस्ट है? Uh, di- like distortion in energy theory, sir. वो use कर सकते. डिस्टॉर्शन. Yes. क्यों? Because it is more accurate sir, compared to other. मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता, ब्रिटल है डक्टाइल. Yes, sir, पड़ता है. तो फिर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में डिस्टॉर्शन ही क्यों, और क्यों क्यों नहीं? आप श्योर है
डिस्टोर्शन यूज करेंगे? Not sure. ओके देन एक नोटबुक पेन है आपके पास? Yes, sir. है. एक बीम बनाइए। Like sir, simply support cantilever वाली. नॉर्मल नॉर्मल बीम बनाइए जो एक तरफ से फिक्स है। हाँ. दूसरे एंड पे एक स्प्रिंग लगाइए, एल लेंथ का, नॉर्मल स्प्रिंग। हाँ, वर्टिकली सर ना. नो नो, हॉरिजॉन्टल वन। हॉरिजॉन्टल में. ओके सर. अच्छा, बीम वर्टिकल यूज कर सकते हैं क्या? बीम कहाँ यूज तो what? होता है? व्हाट द Sir, to डिफरेंस support बिटवीन the बीम loads. एंड कॉलम? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कॉलम? Sir, the type of loads we like acted upon or the use, like we use in horizontally, it is if use it is beam, and if it is used to support the vertical loads, then sir it is column, sir. बस यही डिफरेंस है? मतलब क्या बीम कॉलम हो सकता है या कॉलम बीम हो सकता है? Yes, yes, sir. देन हम लोग अलग अलग क्यों बुला रहे हैं? सर क्योंकि लाइक फिजिकल मीनिंग फिजिकल एप्लीकेशन डिफरेंट है ना सर दोनों का. कॉलम्स के फॉर्मूले बीम में यूज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, उनका लोड अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है. नहीं यूज हो क्यों? सकते. क्यों अगर कंपोनेंट सेम है? सर लोडिंग कंडीशन डिफरेंट है ना. चलिए आप ड्रॉ करिए। सर क्या ड्रॉ बीम करूँ? बनाइए, बीम बनाइए, उसके लास्ट एंड पे स्प्रिंग ऐड करिए और स्प्रिंग को फिर फिक्स कर दीजिए और बीम का एक पॉइंट फिक्स करिए। कर दिया सर. सो में डायग्राम। गुड। स्प्रिंग का लेंथ एल है। जल्दी. बाकी नॉर्मल कंडीशंस में आप जो भी ई यंग यंग मॉडुलस और जो भी है आपको लेंथ एल ले लीजिए, कैपिटल है, और स्प्रिंग का लेंथ स्मॉल एल ले लीजिए। ओके. स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लीजिए और हम ओके इस सर. पूरे सेटअप को डेल्टा टी टेम्परेचर से हीटअप करें ओके सर. तो स्ट्रेस क्या आएगा बीम में? सर हेलो सर. हाँ बोलिए। Sir, I have derived like that sigma is equal to E by L शो मी द in. शो मी, यू नो। Is it visible? या ओके ओके ओके, गुड। कम टू एफएम। व्हाट द मीनिंग ऑफ एनपीएसएच? NPSH is sir net positive suction head, which is a minimum amount of head which is required, which I must be kept to avoid cavitation at the entry of the pump, sir. मैक्सिमम सक्सेस रेट कितना हो सकता है किसी पंप का? Maximum suction head, maximum suction pressure at the pump inlet must be up to vapor pressure, sir, of that liquid at अच्छा surrounding ये temperature. बताइए, एनपीएसएच डिफाइन फॉर विच टाइप ऑफ पंप? Centrifugal pump, sir.
रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में एनपीएसएच होता है या नहीं? Reciprocating. Generally, we define it about centrifugal, sir. But so no idea actually about the reciprocating. आइडिया ही नहीं है। अच्छा। व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप? So in the centrifugal pump, like energy is imparted by the motion of impeller, and in the reciprocating pump, the energy imparted to the fluid is the by like actually compressing the fluid. He In the centrifugal pump, sir, like both pressure and velocity energy is imparted to the fluid. बट ओके, आपने बोला रेसिप्रोकेटिंग पंप में कंप्रेशन के थ्रू करते हैं, फ्लूइड कंप्रेशन। Yes, sir. Like similar to compression, sir. ओके, वाटर कंप्रेसिव Physical फ्लूइड है या gradient होता है. Yes, sir. इनकम्प्रेसिबल? Water वाटर कंप्रेसिबल। incompressible. Incompressible. How you can compress water in reciprocating pump? Sir, like compression in the sense like a physical, not like actual compression, sir. Uh, so like it's due to the movement of piston, the fluid is forced out in the delivery valve, sir. So Not we like don't actual compress the compression of fluid. that. Yes, We sir. don't Like compress the you just impart the energy in the sense like of compression, sir. in form of compression. Yes. तो बेसिकली आप कहाँ रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करेंगे और कहाँ सेंट्रीफ्यूगल? Sir, depend upon head and discharge requirement. जहाँ सर हेड ज्यादा चाहिए और डिस्चार्ज कम चाहिए वहां पर सेंट्रीफ्यूगल लगा सकते हैं सर. एंड वेयर डिस्चार्ज मोर एंड लेस हेड देन सर वी कैन यूज रेसिप्रोकेटिंग सर. लेस है। ओके, आपने पंप की परफॉर्मेंस कर पता है आपको? स्टडी नहीं किया सर अभी. ओके, तेरा पता है परफॉर्मेंस कर क्यों बनते हैं पंप के लिए? नो सर. पंप, अच्छा टरबाइन, हाउ यू डिफाइन टरबाइन? Turbine is the device which converts the hydraulic energy into mechanical energy, sir. हाइड्रोलिक। Sorry, sir. Yes, sir. Hydraulic or fluid in hydraulic turbines, or which is generally energy producing device, sir. ओके, एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। Yes. टरबाइंस के टाइप बताएंगे आप? Like sir, depend upon fluid, gas turbine, steam turbine, and hydraulic turbine, sir. ओके, और And wind turbine also, sir. विंड टरबाइन। Yes. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड टरबाइन एंड हाइड्रोस्टैटिक टरबाइन? Hydrostatic, sir. हाइड्रोस्टैटिक टरबाइन एंड विंड टरबाइन। So basically, the difference is of fluid. In the hydrostatic turbine, fluid is generally water, and in wind, it is due to the motion of atmospheric air, sir. अच्छा, किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, हाइड्रोस्टैटिक टरबाइन का या विंड टरबाइन का? Sir, hydrostatic का ज़्यादा होगा, sir. क्यों? Because the हाइड्रो amount of टरबाइन, energy. What, sir? हाइड्रो टरबाइन और विंड टरबाइन में से किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? I think sir, hydraulic का ज़्यादा होगा. क्यों? So I don't know about wind turbines, how they calculate any efficiency in that case, sir. इट्स ओके। चलिए, पावर प्लांट में कौन सा साइकिल यूज होता है? Sir, in steam power plant, Rankine cycle is used. रैंकिन साइकिल। व्हाई नॉट कार्नोट? Carnot is basically sir ideal cycle, so it is not able to physically implement that in the real life. रैंक रैंकिन साइकिल आइडियल नहीं है? It is ideal, but with the help of some modifications and some processes, sir, it is actually implement in the real life. We can कार्नोट, implement it. ओके, कार्नोट के कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कार्नोट साइकिल? Sir, basically there are two processes like one is the isothermal and isentropic processes.
First, from like starting isentropic compression, then isothermal expansion, then again isentropic, no sir, isothermal heat addition, then isentropic expansion, and again isothermal heat rejection, sir. ओके, तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन में प्रॉब्लम क्या है? वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है सर आइसोथर्मल, बिकॉज फ्रॉम वन साइड वी हैव टू ऐड द हीट एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू रिजेक्ट द हीट. So that process is very slow, so that is not, and like in isentropic processes they are very fast in nature. नो नो, So like आइसोथर्मल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और आइसोथर्मल हीट एडिशन में प्रॉब्लम क्या है? क्या ये पॉसिबल है या isothermal नहीं? isothermal पॉसिबल है सर हीट एडिशन. कहाँ यूज होता है? कहाँ आपने देखा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या हीट एडिशन? रैंकाइन साइकिल में, लाइक बॉयलर में जो प्रोसेस होती है वो, like in inside the saturation curve, like in phase change, during the phase change, so it is isothermal heat addition. ओके, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है कार्नोट साइकिल में. इफ इट इज पॉसिबल और इन यूज, ये तो यूज करते हैं ना हम लोग, आइसोथर्मल हीट एडिशन और All हाइड्रोथर्मल cycles are हीट रिजेक्शन. derived from that Carnot only, sir, like all cycles. ओके, लाइक कि आपने बोला आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, Yes ये तो sir. नॉर्मली करते ही हैं, तो ये तो प्रॉब्लम करते नहीं है. हैं. Yes sir. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? So rankine is basically derived from the Carnot cycle नॉट only, sir. रैंक है, फोकस ऑन द कार्नोट साइकिल. आपने दो प्रोसेस बोले, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, ये तो पॉसिबल है और हम करते भी हैं. करते बाकी हैं. बचे Yes हुए sir. आपके दो प्रोसेस, Yes. आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. तो इनमें प्रॉब्लम क्या है? So I think Carnot is the air standard cycle, sir. In the case of air, it is difficult to implement that, sir. कार्नोट साइकिल एयर स्टैंडर्ड साइकिल, Really working system is air only, sir. एयर ओनली. Yes. उसी को मॉडिफाई करके रैंकाइन बनाया, वो स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, स्टीम पावर प्लांट. Yes, sir. देन हाउ यू कैन से दैट कार्नोट इज ओनली फॉर गैस, नॉट फॉर स्टीम? Yes, yes. Sorry, sir. I'm not able to. ओके, लीव इट. रैंकाइन साइकिल्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन के बाद हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं? Like, sir, in turbine, we use reheating. Again, regeneration is also done, like bleeding of steam. And yes, sir, that's it. And intercooling is used, sir. No, sir, in intercooling, no, not used. Sorry, sir. Regeneration is used. Reheating is used, sir. व्हाई वी यूज रीहीटिंग इन पावर प्लांट? When, sir, like when we see that Rankine cycle, when we increase the pressure, we increase the pressure in the boiler. So while expansion of steam, इन बॉयलर वी इंक्रीज प्रेशर. no, sir, like after boiler, like the fluid uh, pressure, which is pump which increase the pressure when we increase आफ्टर, a higher level. Pump is used to increase the वन pressure. सेकेंड, When this pressure is increased वेयर इज पंप इज यूज, बिफोर बॉयलर और आफ्टर बॉयलर? before boiler, sir. ओके, बिफोर बॉयलर. When we increase the pressure, boiler pressure means not in the boiler, the pressure which is at which the steam is there, which we increase. And while expansions, that in turbine, the during expansion, sir, dryness fraction drops. And due to this, it causes the serious damage to the turbine blades. So to avoid this phenomena, we used reheating, sir. बस एक ही रीजन है इरोजन को Uh, रोकने के लिए, या कोई और भी रीजन हो सकता है? Also, it increases, sir, like turbine output also, sir. टरबाइन आउटपुट. I means हाउ like टरबाइन cycle. आउटपुट डिपेंड, हाउ टरबाइन like efficiency depend upon bed fraction?
No, sir. Sorry, it increases the net work of the cycle, sir, not turbine it, output. it increase Yes, sir. Net bring work it output. और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस आएगा? In mean heat temperature difference, sir, efficiency भी increase होगा, sir. वाई? Because the temperature, mean temperature addition, mean temperature addition has increased, sir, in this case due to reheating. चलिए कंक्लूड करते हैं आपका इंटरव्यू। आपको लाइक ये थर्मल ठीक है आपका, रैंकाइन साइकिल्स और कार्नट दोबारा से पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा, मतलब यू कैन लाइक आप कॉन्फिडेंस में बोल सके, ठीक है। बट मशीन डिजाइन आपने बोला है और बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है बेसिकली, लाइक ऑल द बॉल बेयरिंग्स, निडल बेयरिंग्स, इट्स कम अंडर द एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग्स। अगर आपको वही नहीं पता है तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं है कुछ, ठीक है। और ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहाँ यूज होती है, जनरल बेयरिंग्स कहाँ यूज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली बेयरिंग्स क्योंकि पावर प्लांट्स में यूज होती है, Okay. ठीक है। पंप्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अभी, एफएम मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, काफी क्लोज हैं अभी, स्पेशली पंप्स के इफिशिएंसी कर्व, परफॉर्मेंस कर्व, एंड कहाँ कौन सा पंप यूज होता है, Okay. क्या क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और स्पेशली हम लोग क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते रहते हैं। Yes. रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में आपको बेसिक भी नॉलेज ढंग से एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, Yes, सॉरी sir. रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है और कहाँ यूज होता Okay, sir. है, ठीक है। और एनपीएसएच का देखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी है या रेसिप्रोकेटिंग के लिए, सो यू Okay, हैव टू sir. वर्क ऑन इट ना। Yes, sir. चलो, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? No, no, sir. ओके ग्रेट, वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड। ओके।